वी वर ऑन द बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस हमारे किसी भी सब्सटेंस के लिए बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग और व्हेन वी आर मेजरिंग द रेडिएशंस। सीन ये है कि आप जब भी कभी रेडिएशन काउंट चेक करना चाहते हैं किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल का, तो आप जब रेडिएशंस या रेडियोएक्टिव काउंट मेजर करते हैं तो आप सिर्फ रेडिएशंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सोर्स नहीं लेते हैं, बल्कि आपके सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज मौजूद हैं वो सब भी अपनी रेडिएशंस उस पर्टिकुलर काउंट के अंदर ऐड करवाते जाएंगे, एंड दैट वुड एक्चुअली मेक अ सेंस इन सच अ वे दैट यू वुड सी और यू वुड फील कि जो रेडिएशन काउंट आपके पास आ रहा है वो रेडियोएक्टिव सोर्स का ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ रेडिएशंस सराउंडिंग से भी एड अप हो जाती हैं वहां पर, विच आर एक्चुअली द अननेसेसरी रेडिएशंस। तो उन एक्स्ट्रा रेडिएशंस का नाम हमने रखा है एज द बैकग्राउंड रेडिएशंस, एंड वी कंसीडर देम एज यूजलेस और unnecessary radiations in our measurement or in our calculation. So what we do to get rid of this background radiation is that we pick up a GM tube. The GM tube basically is a measuring device for radiations. ये एक gigamolar tube है. He was basically a scientist who made up this tube to measure the radiations. अब हमने क्या करना है, हमने GM tube को लेकर आना है onto the surrounding where we are going to perform this measurement process. उस सराउंडिंग में हमने रिसीवर की तरफ डिलीवर करवाना होगा रेडिएशंस को from the surrounding. So you have all of the objects in the surrounding giving their rays to this receiver, and this receiver is showing some value in return. तो हमारा रिसीवर हमें दिखा रहा है as 25 radiations in current state. Now what we do over here is that we then bring in our radioactive source. As you can see over here, we have the radioactive source over here now. और अब जो radiations आपके पास आ रहे हैं, they are from the source as well as from the background. But now you have the radiations as 120, in fact 175, and you can directly figure out the actual radiations from the your object or your radioactive source, and that would be just by the difference of previous reading and current reading. The previous one was 25 in the absence of source, 175 is in the presence of source. So the radiation of source itself is going to be the difference of 175 and 25, and that will stand as 150. Now over here, background radiation would be considered as 25 radiations, and that would actually be the useless or the needless radiations that were not required at any point. Now moving forward, we have to understand carbon dating as well. तो कार्बन डेटिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने रेडिएशंस को यूज करते हुए एज फिगर आउट करनी होती है किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल की, और इस प्रोसेस को हम ना सिर्फ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के लिए बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी हैं वो इनिशियली कितनी रही होंगी और अब कितनी है. So what we do is we take up a box or a body and we expect it to have the radiations as 100,000. तो 100,000 हमारे पास radiations थी इस box की या इस body की. Now they are only having 15,000, and in 2 days it lost 100 radiations as well. तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि टोटल रेडिएशन लॉस हमारे पास है 85,000, क्योंकि इनिशियली व्हेन इट वाज बॉर्न इट हैड रेडिएशंस ऑफ 100,000, नाउ इट इज हैविंग ओनली 15,000. तो हमने डिफरेंस निकाला है दैट एंड्स अप एज 85,000 रेडिएशंस. और हमें ये भी पता है कि 2 दिन में रेडिएशन रिडक्शन रहता है एज 100 रेज. तो हर 2 दिन में 100 रेज रिड्यूस हो रही हैं. We have to reduce 85,000, and that would be X number of days.
and with this particular calculation you would end up getting your answer for the age of this body, and that would actually be 1700. तो 1700 days हो चुके हैं इस ऑब्जेक्ट को since it was created until now. This is how you could figure out the age of any object or any body. Now the point here is कि ये पूरी कैलकुलेशंस हमें करने की जरूरत नहीं है. चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द एनर्जी एमिशन एंड द रेडियोएक्टिव डीके क्लॉक. तो एनर्जी एमिशन और रेडियोएक्टिव डीके क्लॉक को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में, विच वाज यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एसआई सिस्टम. तो वहां से जो रेडियोएक्टिव डीके क्लॉक आपने कवर किया था वही रेडियोएक्टिव डीके क्लॉक यहाँ पर ये सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है एंड वी एंड अप गेटिंग आवर आंसर राइट अवे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन. तो ये सारी कैलकुलेशंस रेडियोएक्टिव डीके क्लॉक ने करने होते हैं, लेकिन एग्जामिनर हमारे पेपर में यूजुअली ये कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दे देते हैं, या इट इज अ वेरी पॉसिबल चांस कि वो इस साल भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल हमें दे दें इन पेपर नंबर 2. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो अब हम ये तो समझ चुके हैं कि कार्बन डेटिंग से एज कैसे फाइंड की जाएगी. अब हमें ये समझना है कि हाफ लाइफ क्या चीज होती है. सो एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी आइडिया ऑफ व्हाट इज हाफ लाइफ? Yes. Anyone of you having any idea of half-life? Basically, half-life is the time. Exactly. Very good, Huda. It is the time needed for a body to lose half of its mass or energy by radiations. As we have already discussed previously, कि जब भी कभी कोई हैवी हो जाती अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें radiation नहीं है, उन अपने आप को मेंटेन करेगी, अपने आप को ट्राई टू बी एवर. तो अब सीन ये हुआ है कि जब भी कभी आप किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को रेडिएशन एमिट करते हुए देखेंगे, तो उसने एमिट करते हुए अपनी रेडिएशंस को एक सर्टेन पॉइंट को रीच करना है, मास हाफ होती है. तो वो पॉइंट जहाँ रेडिएशन मास की हो जाए, उस पॉइंट को या उस कहते हैं हाफ लाइफ. नाउ वी हैव अ formula over here for half life, and that is actually related to the count rate. So it's basically the new count is equals to the old count multiplied by half raised to the power of n. Now over here, new count is basically the current number of radiations, current number of radiations. It basically means that how many radiations are currently being measured from that object. तो इस वक्त जितनी भी रेडिएशंस वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी ओमिट कर रही है, उसको हम प्लेस करेंगे in the position of new count. Then we have old count, and old count is basically your old number of radiations.
So what Okay, so n over here is now going to be your number of half-lives, while old count is the initial radiation count from that object, and new count is the currently ongoing radiation count. तो इस वक्त जो भी रेडिएशंस आप डिलीवर कर पा रहे हैं या मेजर कर पा रहे हैं, that is your new count, while the radiations that were previously being measured is going to be your old count or old number of radiations. And finally we have n, which is the number of half lives. अब इसको यूज कैसे करना है ये जरा आप समझ लें. They will give you a question saying that, okay, I'll repeat it. New count is equals to old count multiplied by half raised to the power of n. n is basically the number of half lives. जितनी भी हाफ लाइव्स पास होंगी उसको आप n की जगह पर रखेंगे. ओल्ड काउंट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ रेडिएशंस which were previously being measured. Like जब आपने ऑब्जेक्ट को उठाया था और उसको मेजर किया था अबाउट ईयर बैक और 2 years बैक, तो उस वक्त उसकी रेडिएशंस क्या थी वो आपने मेजर की होंगी. दैट वुड बी योर ओल्ड काउंट. while now if you are watching it, तो अब इसकी रेडिएशंस कितनी है वो आपने रखना है न्यू काउंट पे. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू फिगर आउट द एज ऑफ इट. आप उस ऑब्जेक्ट की एज फिगर आउट कर सकते हैं, आप उसकी काउंटिंग भी फाइंड कर सकते हैं. लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन एंड दैट वुड लाइक क्लियर अप द रिमेनिंग queries in your mind. So they are saying that a block of wood previously had 80,000 radiations, undergoes 4 half-lives. Find the new count in first part and in the second part. Find the age of this block if one half-life is 800 days. Now, starting up with the first part, so हमें करना है new count rate. The formula is new count is equals to old count multiplied by half raised to the power of n. Now, n is your number of half-lives. As you can see, this block has underwent 4 half-lives over here. So what we are going to do is, we are going to keep n as 4. New count is unknown. Old count was 80,000 multiplied by half raised to the power of 4. तो हाफ लाइफ हमारे पास 4 है तो n की जगह पर 4 आ गया. Now you just need to simplify this and check up the final answer. It is going to be 80,000 16
and that would give you the new count. Can any one of you please tell me what would be the new count? ओके परफेक्ट 5000 इज द करेक्ट आंसर. तो आपके पास न्यू काउंट आ गया है एज 5000. Okay, now we need to figure out the age. So for age, what you just need to do is you need to multiply the value of half-life with the time for one half-life. That would give you the age right away. So age is going to be 4 multiplied by time for one half-life was given as 800. So you are just going to multiply 4 with 800 and that would be 3200 days. I hope now the concept of half-life and aging is perfectly clear to you people. Now we are moving forward onto the next concept, and that is theory of relativity. Anyone having any idea of theory of relativity? Yes. Any one of you having any idea of what is theory of relativity? Okay, so theory of relativity is defined by Einstein and basically stated that if a body is traveling at a speed of light, if a body is traveling at the speed of light, his energy will be directly proportional to the mass. Now, the statement is not that important, but you shall have an idea of it that whenever a body is traveling at a speed of light, कोई भी object, कोई भी body जब speed of light पे travel है तो उसका मास रिलेट आता है एनर्जी के साथ और मास एनर्जी के बराबर हो जाता है. So if the object is traveling at the speed of light, the mass would itself convert into energy और सारा मास एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट आपको मास की फॉर्म में नजर आ रहा था वो अब एनर्जी बन चुका होगा. Now with that we have a formula as well which is E is equals to mc square. Now this is one of the most famous formulas और ये हमारे पास theory of relativity से है. E is your energy, m is your mass and c is the speed of light. Can any one of you tell me the speed of light?
What is the speed of light? Any one of you? The speed of light is 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Now, we are done with theory of relativity. Now we are moving on to the hazards and precautions of radiations. Okay, so starting up with the hazards first of all. तो हमारे पास जितनी भी कॉस्मिक रेज होती हैं दे कम फ्रॉम स्पेस एंड फ्रॉम स्टार्स लाइक सन and all of them are very hazardous to us. Like the hazards would include skin issues, including cancer, can cause cancer in organs, and could even damage the objects prone to radiations. Like sensitive objects, sensitive bodies which are prone to radiations could be damaged as well. So these are the issues coming up from radiation. These are the hazards of radiations. Now moving towards the precautions. So precautions में सबसे पहले we can use lead box for delicate objects, like anything which is prone or which is like very prone or delicate towards radiation would actually be placed in lead box, क्योंकि lead जो है वो सारी radiations को block कर सकता है. Not even a single radiation could pass through the lead box. So a lead box would safeguard our delicate or like our prone objects which are very much impactified by the radiation. तो वो चीजें वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ज्यादा डैमेजेबल हैं फ्रॉम द रेडिएशन उनको हम लेड बॉक्स में रख सकते हैं. मोर ओवर वी कैन यूज सेफ्टी clothes when dealing with radiations, and we should not come across radiations that oftenly. So we shall use the radioactive objects not so oftenly.
and we shall keep a distance while interacting with them. And one more important thing is that we shall not directly touch the radioactive objects. So whenever we are dealing with any radioactive body, we shall not touch the radioactive source directly. So you should always avoid coming in direct contact with the radioactive bodies. Now, these are the hazards and precautions of radiations. Now, coming towards the benefits of radiations, or you could say the uses of them. Do you people have any idea of where can we use radiations? Yes, any one of you having any idea? No, basically killing a parasite or killing bacteria is the job of UV rays. UV rays are used in sterilization. EM spectrum वाले chapter में हम ये cover कर चुके हैं. We can use them in cancer treatment. We can use them in finding leakage in underwater supplies or underground lines, whether be it of gas or whether be it of your like water pipelines. All of them can be figured out by the help of radioactive source. So we can like use radioactive source to figure out the count rate and then have an idea of the leakages. So they are good to find leakages in underwater or sorry, underground supplies. The process is that if we are having a line going through beneath the ground, so we are actually going to have a breakage over here. तो अब हो ऐसे radioactive source put in करते हैं this radioactive, and once it reach over here, it would start to emit its radiation out of observe आपकी जो radiation ज्यादा होगा all the way from actual point on a shoulder. Understand that is the point where a blockage, and you would stop over here, dig out the line. Okay, so this is to scrutinize food packagings. Now, what we do over here is that we use a radioactive source
with a very small half life. Now, why are we using a small half-life radioactive source? It is because we are scrutinizing food packaging. तो आप फूड पैकेजिंग अगर स्क्रूटनाइज कर रहे हैं तो आपने कुछ रेडिएक्टिव सोर्स या उसकी रेडिएशन एमिट करवा देनी है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर या अपने फूड पर. नाउ द फूड वुड बी कंटेमिनेटेड बाय रेडिएशन. सो व्हाट वी मेक श्योर इज कि आप कोई ऐसा रेडिएक्टिव सोर्स यूज करें जिसकी रेडिएशन बहुत जल्दी खत्म हो जाए. So if the half-life is very small, the object or the radioactive source would actually die out quickly, and all of its radiation count would come down to zero, and the contamination would be removed. Okay, kindly just confirm if you can see the screen and can hear me loud and clear. Okay, so we are to scrutinize food packaging. So we would always use beta or gamma radiations क्योंकि alpha radiations food box या food container से block हो जाएंगे and we would not be able to check the leakages out of it or check the space opened in the container. तो हम बीटा या gamma को use करेंगे and we would use a small half life radioactive source ताकि जो भी आपकी radiations हैं वो जल्दी से emit होकर और आपका जितना भी रेडिएशन है वो सब नलिफाई हो जाए एंड द फूड शेल नॉट बी कंटेमिनेटेड एनी मोर क्योंकि ये कंज्यूम होना है द यूजर वुड कंज्यूम इट सो इट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड बाय रेडिएशन क्योंकि रेडिएशन वुड अल्टीमेटली लीड ऑन टू कैंसर सो वी मेक श्योर दैट द रेडियोएक्टिव सोर्स इज either beta or gamma and it should have a small half life as well. So that is like the use case of radiations. Now we are done with everything over here. One last thing that I need to tell you is कि हमारे पास एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट होता था जहां पर हमारे एक रदरफोर्ड नाम के भाई थे जिन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया. उस फॉइल के ऊपर इन्होंने बम्बार्ड करवाया था अल्फा पार्टिकल्स को और अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड होने के बाद कुछ अपना एक डायमेंशन चेंज देते हैं. सो what most of the alpha particles did was they went straight. So most of them went straight जबकि कुछ alpha particles वापस आ गए थे right from here. So while they were striking this gold foil, so some of them returned back while most of them went straight. तो यहाँ से रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया with a statement that most of the gold foil is having empty space while a very small area is the nucleus. So a very small area is the nucleus जहाँ से आपका एक blocked portion generate हुआ है. like एक ऐसा रीजन है जिसको अल्फा पार्टिकल पास थ्रू नहीं कर सकता है while
the rest of the region is empty. So this is like a structure of an atom, and over here you would see that most of the atom is empty while a very small portion is occupied by the nucleus. So most of the alpha particles would go straight while very few would hit the nucleus and would return back. So that was the case concluded by gold foil experiment. This is very unimportant. It was only assessed back in 2004 एंड इन 2007. इसके अलावा ये कभी असेस नहीं हुआ है. और अब यहाँ पर केस ऐसा है कि फ्रॉम लास्ट 6 years until from 2017 till now it hasn't been assessed even a single time. तो ये इतना important नहीं है, but it is part of our syllabus, so you need to have an idea of it. तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुका है of radioactivity. You people इंशाल्लाह in the group. तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, and then we'll continue on Tuesday with our next and in fact the last chapter which is space physics. तो Tuesday से space physics से start करना है and we'll hopefully be done by that chapter in upcoming 2 weeks. So that's for today. But before leaving, I need a confirmation if all of you are perfectly clear with everything taught, or is there anything which is unclear or ambiguous? Yes, is everything perfectly clear? Okay, perfect. So see you then, inshallah, in the next class on Tuesday. Take care. Allah Hafiz.